अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो है क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने सारा साल कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो अगर आप इन पास पेपर को मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ जो है एग्जाम में पास हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे जो है मार्क्स लेके आप पास हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक जिन्होंने सारा साल जो है बुक्स को हाथ नहीं लगाया उनका तो टारगेट यही होगा कि हम जो है इस बुक में से जो है पास हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग जो है इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप जो है बोर्ड्स में बहुत अच्छे जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ा सा पास्ट पेपर जो है डिस्कस करते जाएं कि आपके पास जो है 19 मार्क्स के जो है एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से जो है ये जब वीडियो एंड होगी तो इसके लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ जो है पास्ट पेपर भी शेयर करूंगी स्क्रीन के साथ। ऊपर आप लोगों के साथ शो होगा, इसमें लिखा होगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। यानी कि 5 मार्क्स के जो है आपके 5 मार्क्स के जो है आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगी, जिसको आपने जो है फिलअप करना होगा और ये 5 मार्क्स की होगी। तो चलते हैं उसको जो है सबसे पहले जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। द सन इन the west sets. If he offers me a job, I it will accept. How long have you been Evans? Waitings. They always back home late. Come. They dash tea every morning's drink. I have already dashed 3 cups of coffee. Taken. Seven MCQs. She dash in this office for 7 years. Has been working. इसको आप साथ साथ जो है रीड करते जाएं और आपके साथ साथ जो है तैयारी होती जाएगी। ये तकरीबन थोड़े से ही एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं और एनालाइज करके आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। ई डैश 20 minutes लेफ्ट। ई 20 minutes left. Good students always work hard. She since morning has been sleeping. I her in the plains met the baby dash for milk now is crying. It since last night had been raining. They their work by tomorrow will have completed. They dash to sleep at 10 ago. It's in winter's rains. She dash her cat very much loves. She dash to teach an hours ago. Went they dash on the table for weeks. Lie has been lying. 21 MCQs. She English quite well speaks. 21 वाला MCQs. It's at present is raining. 22 वाला the dash for London tomorrow will leave. I him next Monday. We shall see. Why do you eyes make? He dash a story the last day told. My father has dash for Karachi. Left 27 MCQs. He dashed these books on the Monday month ago. Wrote she dashed before the party against had reached. Hadi always the truth speaks. The baby for milk last night tried. The bus before we slept. ये एमसीक्यूज हैं जो है इसको मैं रीड करने लगी तो काफी ज्यादा टाइम लग जाना और काफी ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो आप इसको ऐसे ही देख लें। 30 वाला एमसीक्यूज क्राइड जो 31 वाला है हैड स्टॉप्ड। 32 वाला जो एमसीक्यूज है आई this motorbike only a month ago brought. Have you this book? Read. She did not say anything before he had left. She her work before the guest arrives will have finished. I was going to airplane when I dash her saw. The idea is very hard.
वर्कड 39 वाला एमसीक्यूज। The earth around the sun revolves. She French at present is learning. After you, I went to sleep. Had left. I this exercise in an hours ago. Shellfish finish. She has dash home him back. Sent the girl are dash net ball playing. Do you dash at to school every day? Go. 35 वाला MCQs have been read किया. 36 वाला MCQs. 37 वाला भी आप देख ले. हैड लेफ्ट वी डिड नॉट आ साउंड हियर्स. आप इसको खुद ही आस्ते आस्ते जो है रीड करते जाएं. इस तरह जो है काफी लेंथी वीडियो बन जाएगी. ये तकरीबन 100 के लगभग जो है एमसीक्यूज है जो फॉर्म ऑफ वर्ब में है. अगर आप इतने एमसीक्यूज जो है रीड करने लगे तो आपका तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं. अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर जो है इसी में से ही कवर हो जाएंगे. आगे जो आ जाते हैं. चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स. सबसे पहले दिएगा प्रोडक्शन, एक्सचेंज, माइट, पर्सनल, सेपरेट, address, certains, excellence, noise, perfections, rottens, dynamics, ables, people, delines, dinner, academy, available, energy, enemy, customs, sermons, relevance, contract, priority, excels, motivation, success, privilege, laboratory, defy, envelops, achieves, modern, attempt, revolutions, language, interest, revenge, career, security, fossil, luxury, academic, demise, associations, entertainments, inter intercodes, educations, actually property, infections. ये भी आप देख ले. ये भी तकरीबन जो है लगभग 100 के एमसीक्यू लगभग है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स. इनके भी आप स्पेलिंग को अच्छी तरह एक दफा रीड कर लें. इंशाल्लाह इसी में से ही कवर हो जाएगा. आगे आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस. ये एंटोनियम्स और सैनोनिम्स ही हैं जिसमें से भी आपका पेपर आएगा तकरीबन 4 मार्क्स का. ये आप वीडियो पॉज कर करके स्टॉप कर करके आप इसको जो है रीड कर सकते हैं. अगर मैं रीड करने लगी तो काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो जानी है. इसके बाद मैंने अपलोड भी करनी है तो आपको मिलते मिलते तकरीबन रात के 10 बज जाने हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर्स. ग्रामर के रूप से आपने जो है करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करने हैं. ये भी आपके जो है 4 मार्क्स के हैं.
और इंशाल्लाह इसी में से ही आपका ये पेपर जो है कवर होगा। जितने एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि पहले भी काफी ज्यादा जो है यूट्यूब पे ऊपर गेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, लेकिन कोई कोई एमसीक्यूज की वीडियो अवेलेबल है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ जो है एमसीक्यूज की वीडियो बनाकर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग अगर इसी को तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है इसी में से कवर हो जाएगा। क्योंकि ये तकरीबन पिछले 10 साल के 5 पेपर से लेके जो है इसके नोट्स बनाए गए हैं। ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट बुक रिवाइज। इस बुक का पेज नंबर आपने जो है 50 जो है वो भी रीड कर लेना है। उसी के अंदर से भी एमसीक्यू जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लिए गए हैं। इसके अलावा जो है बुक पेज नंबर था 110 था या 1 था आई थिंक, जिसके अंदर से हाँ जी 101 जो है पेज नंबर आपने बुक का जो है वो भी एक रीड करना है। उसके अंदर से भी एमसीक्यू दिए गए हैं। और पेपर में आपने सबसे पहले जो आपके बुक के अंदर 3-4 व्यू एक्सरसाइज है उसको आपने लास्ट में प्रिपेयर करना है। उसके अंदर से जो है इंशाल्लाह 50 to 60% पेपर आपका कवर हो जाता है। उसके बाद बुक पेज नंबर 160 जो है ये भी आप लोगों ने जो है रीड कर लेना है। इसके अंदर भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम द 2023 बोर्ड्स पेपर्स के। 2023 का पेपर जो है उठाया गया है, वो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहे हैं। वर्ल्ड सैनोनिम्स है जो 2023 के अंदर जो है तमाम बोर्ड्स के अंदर जो है आए थे, बार बार रिपीट हुए थे, वो आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर रहे हैं। पूरा यूज ऑफ फॉर्म है जो 2023 के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहे हैं अभी। मेरे ख्याल से कोई कम ही वीडियो होगी जो आप लोगों को इस तरह की यूट्यूब पर मिली होगी। यानी कि सबसे पहले आप लोगों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज वर्ब्स वगैरह शेयर किए गए हैं। उसके बाद जो है 2023 का पेपर उठा के ऑल बोर्ड्स के जो है वो एमसीक्यूज निकाल के आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहे हैं। चार क्वेश्चंस आंसर फ्रॉम द 2023 बोर्ड्स पेपर्स। यूनिट 1 से जो है आप लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। Why did the non-Muslim trust the Rasuls? Why does the word proclaimed means? How can people achieve perfections in the moral, spiritual, and social areas of life? How is Hazrat Muhammad is a perfect model and example for all us? How did the Rasuls set high and noble ideas for all mankind? How were peoples of Makkah convinced the Rasuls justice even before the Nabuwwat? What standards of justice did the Rasuls practice as the head of the states of Medina? What made the non-Muslims bring their suits to their Rasul? Sallallahu alaihi wasallam. Choose. उसके बाद यूनिट नंबर 2 चाइनीज न्यू ईयर। व्हाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 dishes? व्हाई डज द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स? व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थ्रो क्लीनिंग्स ऑफ देयर हाउस बिफोर न्यू ईयर्स डे? What color is not allowed and which color is encouraged on a Chinese New Year? Why? What do decorations on doors and windows symbolize? What is the significance of the New Year's evening dinners? What do the little red envelopes filled with the money symbolize? What is the importance of the Chinese New Year's for the Chinese family? Try again के अंदर से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। Why is that try again important in life? What is the point repeating the sentence try again? फोर्थ वाला यूनिट जो है फर्स्ट एड। डू यू शुड कीप चेकिंग इफ द bleedings has stopped? Why is it the necessary to keep away soap from the wounds? How it is antibiotics, creams, ornaments good in the healings in the wounds? Why should do you
If you are allergic adhesive material used in the most bandage, what do you need to see a doctor? Six वाले जो chapter है television as newspapers. How does television make us lazy? How is a newspaper more convenient mediums of news? How does the viewers get distracted while watching TV news? In what ways view news in TV is easier than the reading the newspaper? How do newspaper give us more in-depth coverage? Why do people read more than one newspaper? How can readers give feedback to the newspaper articles? What medium do you prefer for news? Why? टर्मिनोलॉजी यूनिट्स है उसके अंदर से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं. लिटिल बाय लिटिल वन वर्क्स फॉर व्हाट इज द मोटिवेटेड ऑथर पार्टिसिपेट सो एक्टिवली. What are the some distinctions of the writers? How has the writer spent his summer vacations? What has he gained from the summer job experience? How are these experiences helpful to him in futures? What is the kind of people is it writer? What is the quality impress you? एट वाली जो है पोएम्स ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स इस पोएम्स को छोड़ देते हैं, इनके क्वेश्चन जो है लर्न वगैरह नहीं करते. लेकिन इसके अंदर से जो पिछले जो ट्राई है उसके अंदर से मैं दो तीन क्वेश्चन बताई, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है. व्हाई डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल? लाइन वाला जो चैप्टर सिलेक्टिंग द राइट कैरियर चैप्टर जो आपका यूनिट है. Explain the phrase profitable livelihoods. What were some famous career for the young peoples in the past? Nowadays, non-traditional career are more appealing to any fields. Is there any need of proper career counseling department? Why? How can career counselors help the young people? You know, Development 10 जो है world without booking books. How does a books contact the readers and the writers? In what way the books better than the radio, TV, and internet? Why should people be given more opportunity to read the books? Which books has inspired you the most? Why? What is the responsibilities of parents? What are the factors responsible for the dividing people's statements for books? इसके बाद चैप्टर नंबर जो है हमारे पास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. What kinds of the boy was Pip? Why did Pip become successful businessman man? How looked after his death of his parents? Who was Jew? How did the treat Pips? How did Pips give foods and drink to the prisoner? What happened to the prisoner? Prisoner के साथ क्या हुआ? अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड सप्लाईज चैप्टर नंबर 12. इसके अंदर से भी वर्ड एज द वर्ड रिफ्लेक्टेड मींस डू यू आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी? व्हाई? हाउ इज द फॉसल एनर्जी इज फाइनाइट सोर्स? व्हिच एरियाज द मोस्ट अफेक्टेड? instant growth in populations? Why are the developing countries going to the suffer more due to our populations? What is the major cause of the food shortage and malnutrition? How are water resources under the great stress? What is the limitation to improve technology? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ में जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसको आप प्रिपेयर कर ले तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से कवर हो जाएगा. यूनिट नंबर जो है 13 faithfulness. What cause did the young man bring to Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala? Why does the old man's hurl stones at the camels? On what conditions was the criminals allowed to leave? Why were Sahaba worried? Why did the accusers forgive the villagers? Most important translations के जो पैड हैं जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो है आप लोगों का क्लास 9th में 3 पैराग्राफ आते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं, लेकिन क्लास 10th में सिर्फ एक ही पैराग्राफ आता है 8 नंबर का जो इसको लाजमी करना पड़ता है. यूनिट नंबर 1 से जो है कौन सा पैराग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है? व्हाई डज द नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल्स? ये वाला पैराग्राफ आपने लाजमी ही करना है. उसके अंदर जो है बाद में इसके अंदर एक और पैराग्राफ दिया गया है. हाउ डज द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनालिटी ऑफ द रसूल? इसके आगे है व्हाट डज द नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर सूट्स द रसूल? हाउ डज द रसूल सेट हाई नोबल आइडियाज? व्हाट डू यू द लिटिल रेड एनवेल्प्स फिल्ड विद द मनी? ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर सिंबलाइज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू ईयर इवनिंग डिनर्स? चाइनी बिलीव्स आफ्टर द क्लीनिंग houses before the new year's. Why how is the failure not is disagree? What can we learn from the failures?
उसके बाद आ जाता है व्हाट डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, ये पैराग्राफ चौथी कहानी के अंदर से है। हाउ व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट consist of, so what is the necessary to keep away from the soap from the wounds, how is an antibiotic screens or ornaments good in healing the wounds, what will happen after the rain stops। ये चैप्टर नंबर जो है इसको आप स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। व्हाट डू यू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी, व्हाट इज द गुड थिंग्स अबाउट द न्यूज़पेपर, हाउ इज अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़, हाउ इज द राइटर स्पेंड हिज समर वेकेशंस। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर्स, ये आप टिक मार करके इसको एक दफा जो पैराग्राफ को जरूर रीड करिएगा। हाउ कैन करियर काउंसल्स हेल्प द यंग पीपल्स, व्हाट इज द मेंट बाय द राइट प्रोफेशन, व्हिच कैरियर्स डू यू want to adopt for, give reasons, which books is inspired to you the most, why। ये जो है आप मेरे ट्रांसलेशन के लिहाज से पढ़ लेनी है। उसके बाद ये ट्रांसलेशन के पैराग्राफ है यूनिट नंबर 1 से, हजरत मोहम्मद लाइफ इज द परफेक्ट मॉडल्स एंड एग्जांपल ऑफ ऑल द पीपल whose you attains। उसका दूसरा पैराग्राफ, हजरत मोहम्मद practically proved that no one would more get pupils as the head of the state of the Medina। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से, rewards to the first day of the Chinese New Year's। Another popular customs is hang by the sign and poster on the doors। It is a traditional practice। Every year is associated with the 12 animals। चैप्टर नंबर जो 4 है उसके अंदर से, we all needs help at times in our lives, handling minor accidents at homes, after you clean the wounds, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। न्यू कवरेज आफ्टर टेलीविजन, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से, न्यूज़पेपर डू यू नॉट रिक्वायर्ड अस टू सिट इन अ प्लेस, ईच मीडियम हैज अ स्ट्रेंथ, चैप्टर नंबर 7 के अंदर से। The last couple of the year have been a long, as a student I am active participants in order to gain an understanding the independence of the responsibilities। I am glad that I have a taste of what। Chapter number 9, today life has become more dynamic and innovative. Innovative. The scope of any field in terms of the markets. Career counselors are generally well informed, so before deciding on any career, the most important paragraph है। यूनिट नंबर 10 के अंदर जो है आप 10 स्टोरीज भी याद कर लेंगे तो बहुत ज्यादा है। Literature is the story of the humans, book are the source of the comfort for us, book after other types of the players। यूनिट नंबर 11 के अंदर से, the story began with the Pips has his friends decided to the London। चैप्टर नंबर 12 के अंदर से, द अलार्मिंग एंड द इंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाट इज अनदर क्रिटिकल एटम्स ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर मोस्ट बी द बेस। चैप्टर नंबर 13, once Umar रज़ियल्लाहु ताला the caliph looked at the young man, the third day down the accusers and security were present, what was the whole court of the worried state of the Medina। ये रही आपके जो है इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, इनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टैंजा समरी, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप समरी ही कर ले। राइट द समरी ऑफ द पीस पोएम, ट्राई अगेन है, रेन और जो है पीस, तीनों ही समरियां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप तीनों ही तैयार करके जाइएगा। 5 मार्क्स की ये समरी आ जाती है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने जो है इसके पैराग्राफ किए हैं तशरीह के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा पेपर्स में रिपीट हुए। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे जो है फ्रॉम द 2023 बोर्ड्स पेपर्स। माय लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, माय हाउस, courtesy, health scenes at the railway station, का क्रिकेट मैच at true Muslim television, कायदे आजम। उसके बाद monsoon, heavy rains, my hobby, my favorite books, our school canteens, my schools,
My best friends, our national poet, how to make teas, physical fitness, picnic for sports, street crimes, understanding the Holy Quran with the translation, junk foods, importance and dictionary, computers. मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड जो ऐसे हैं अब उसका ये 2023 के अंदर जो ऊपर वाले हैं आए थे, लेकिन बार बार जो रिपीट हुए हैं वो आप देख लीजिए। माई लास्ट डे एट स्कूल, स्पोर्ट्स एंड ग्रीन, courtesy help scenes at the railway station, hockey match, or pro Muslim life in the big village, television, Qaid-e-Azam, my favorite books, ambitions and life, my hobby, my best friends, importance, dictionary of Muhammad, the influence, electronics, media। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आप वो देख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा ऑफ वर्ड्स जो है अफेक्ट, एडवाइस, अल्टर्स, एंजल्स, बेल, बर्थ, कूल, cooled, clothes, salts, diary, due, eligibles, accept, feet, pairs, fuel, gate, goal, heel, ice, snow, medal, meet, marry, principal, peace, free, quiet, roll, story, sail, sing, teams, vain, right, week। यही तकरीबन तकरीबन मैंने अकेडमी के तकरीबन सब स्टूडेंट से सुने थे आज, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जिन्होंने नहीं करने। मेरे घर के सामने एक बाग था, ये वाला, जिंदगी के नशीबो फ्राड में ऐसे लम्हात भी आते हैं। एक दफा का जिक्र है कि गिदर दरिया के किनारे रहता था। अनारकली, अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है। वालदैन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फर्ज है। एक दफा दो दोस्त सफर पर रवाना हुए। शाहरियार से पहले हम गाँव में रहते थे, ये वाला मोस्ट बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जोहरी तवानाई को इंसान के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूध एक मुकम्मल गजा है। शेर एक ताकतवर जानवर है। एक नौजवान बाग में बैठा था। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। ये हमारा मकान है। ये तस्वीर हमारे गांव की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ताला। अब मिडिल तक तालीम मुफ्त हो गई है। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, मोस्ट टॉपिक्स फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कर सकते हैं। माई स्कूल गर्ल गाइड्स हाउ टू कीप our town cleans and industrial exhibitions on my neighbors Pakistani movement, picnic, street world, Allama Iqbal, my the teacher I like the best, the rainy day। बाकी फैशन से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो के लास्ट पे अगर आप लोगों को ये सारी चीजें जो है आती हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप जो है इसमें से जो चीज नहीं आपकी रह गई है उसको अच्छे से तैयार करें। तो बाकी जो है केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है वो इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये भी आप लोगों के साथ मैंने तफसील के साथ शेयर किया है। एमसीक्यू से लेके जो है पैराग्राफ तक, समरी तक, हर चीज आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।